all of you, bacho. We are live. We are back on ExamDost. We are back with the ESE Officer Practice Series, the final session of Control System, that is Control System Part 7, in which we will deal with questions based on controller compensator and the state space analysis. Chaliye. Let us get started. ESE 2009. Phase lead network provides positive phase angle over the frequency range of interest. Yes. Armature controlled DC servo motor is a closed loop system. Yes. DC servo motor is a closed loop system. Phase lag network provides amplification. No, it does not provide amplification. Transfer function with 0 in the right half is a non-minimum phase. Yes. Either 0 or pole in the right half will make a system non-minimum phase. ESE 2009 again. D is the diameter, L is the length of a servo motor. Which of the following is correct? It has small d and large L. Okay. It has less inertia, small diameter, large length of the shaft. ESE 2009. The poles and zeros of an all-pass network are located in which part? Poles in the left half, zeros in the right half. Also, poles and zeros are mirror image of each other about imaginary axis. Okay, they are mirror image of each other about imaginary axis. ESE 2009, the stator winding of a transformer has higher impedance per phase. The rotor of a control transformer is cylindrical in shape. Okay. So answer is D. They do not have the high impedance, they have the low impedance. And here we are basically using an induction motor as the transformer. So the rotor is cylindrical. ESE 2010. If a controller has 4% neutral zone, positive error band will be 2%, negative error band will be 8%. The neutral zone is also called as dead zone. Controller action of a two-position controller is very similar to a pure on-off controller. Air conditioning system essentially works on a two-position control basis. देखो न्यूट्रल जोन तो डेड जोन होता है where basically output is 0. Two position माने on off, so it is similar to the on off controller. Same as air conditioning. Air conditioning में क्या होता है बेटा? If the temperature is more than the desired, the compressor will be on. If the temperature is less than the desired value, it will turn off the compressor to increase the temperature. So answer will be B. सर ये क्यों गलत है? फर्स्ट वाला स्टेटमेंट, बिकॉज पॉजिटिव एंड नेगेटिव एरर बैंड्स आर टेकन इक्वली. पॉजिटिव और नेगेटिव एरर बैंड इक्वली लिए जाते हैं. ओके नहीं बेटा, मैंने कोई वीडियो हाइड नहीं किया ESE PYQ का. एनी न्यू इनिशिएटिव कमिंग फॉर AE एस्पिरेंट लाइक सॉल्विंग ऑल प्रीवियस ईयर AE क्वेश्चन? चलो देखते हैं, इस पे विचार करते हैं. नेक्स्ट, ESE 2010, the transfer function of a lead compensator is given by the maximum phase shift, so 0 is minus 1 by 3t, pole is minus 1 by t, so alpha is 1 by 3. That is 30 degree. D. Answer will be 30 degree.
बेटा शो कहाँ पे होंगे? आप लाइव सेक्शन में जाओ, नीचे आपको दिख जाएंगे सारे। ESE 2011 in the control system, the controller which can give zero steady state error to a ramp input is off. रैम्प इनपुट के लिए जीरो स्टेडी स्टेट एरर चाहिए। कैसा कंट्रोलर लगाएंगे? इंटीग्रल टाइप। ओके, बिकॉज फॉर रैम्प इनपुट error is 0 for type 2 or higher. This is type 1. Therefore, controller needs to add poles at origin. ठीक है, कंट्रोलर को ओरिजिन पे पोल ऐड करना होगा। फॉर दैट आई नीड इंटीग्रल टाइप ऑफ कंट्रोलर। उसके लिए मुझे क्या चाहिए? इंटीग्रल टाइप ऑफ कंट्रोलर चाहिए। ESE 2011 for a tachometer, theta is the displacement, E is the output voltage, K is the constant transfer function. For a tachometer, output is proportional to the speed. So transfer function is Ks. Ks. Remember this. Tachometer means Ks. प्लेलिस्ट मुझे चेक करना पड़ेगा, बनी है नहीं बनी है, मैं देख लूंगा। ESE 2012 lag compensator on system bandwidth and SNR. Lag compensator is basically low pass filter. So bandwidth reduces and SNR increases. Why? If bandwidth reduces, high frequency noise is filtered out. ये जो high frequency noise है, ये filter out हो जाती है. It cannot reach the output. It cannot reach the output. So answer will be D. ESE 2012, the phase lead compensation is basically used to, you can compare the phase lead to a derivative controller. Compare to derivative controller or high pass filter. So high pass filter increases the bandwidth, reduces the rise time, and derivative controller will decrease the overshoot. Okay, so decrease both rise time and overshoot. Correct? डेरिवेटिव कंट्रोलर ओवरशूट को कम करता है, जल्दी सेटल कराता है सिस्टम को। ESE 2012, given a badly underdamped control system, how can you improve the damping? Damping can be improved by phase lead because it is similar to derivative controller. याद रखने का आसान तरीका है, derivative controller always improves the damping and reduces overshoot. Phase lead compensator, ESE 2012, lead compensator implies zero dominant, or we can say zero closer to origin. So A. Okay, A. 0 is at -4, pole is at -6. So answer will be A. ESE 2012. In position control system, the device used for providing rate feedback. Rate feedback means feedback voltage is proportional to dc by dt. Tachometer. Because it will give you K into S.
रेट फीडबैक माने डेरिवेटिव फीडबैक, दैट इज टैकोमीटर। विपुल मेरे भाई, मेरे हिसाब से पावर सिस्टम अगर रिटेन करना है बीएचयू का कर लो, आईआईटी इंदौर का शायद पावर सिस्टम अभी उतना अच्छा होगा नहीं। ESE 2012 कंट्रोल सिस्टम कंपोनेंट फॉर एविएशन, एविएशन माने फ्लाइट सिस्टम्स आर डिजाइन फॉर 400 हर्ट्ज, यस, वेट रिड्यूसेस व्हेन फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। देखो एविएशन ऑलवेज रिक्वायर्स लो वेट कंपोनेंट, एविएशन की रिक्वायरमेंट है लो वेट कंपोनेंट्स की, करेक्ट। In order to fly, the weight should be as low as possible. ESE 2012, the rotor of a servo motor is built with resistance so that X by R ratio becomes small. Yes, in servo motor inductance is less. So high resistance means high starting torque, better acceleration. So it can accelerate faster. इंडक्शन मोटर में कहते हैं ना हाई स्टार्टिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू हाई रोटर रेजिस्टेंस। ESE 2013 phase lag component compensation on servo system. What is the effect of phase lag compensation? So phase lag is similar to integral type increases, error constant increase, error decrease. So error constant increases. Okay, error constant increases. In a closed loop system, ESE 2013, when the output speed of the motor, output rate control can be used to limit acceleration because rate or derivative of speed is equal to acceleration. Okay. ESE 2014, correct sequence of steps to improve stability. Basically, it is asking us to insert derivative action, reducing gain and using negative feedback. So use negative feedback, reduce gain, and then the last step should be insert derivative action. पहले आप नेगेटिव फीडबैक से देखिए स्टेबिलिटी बढ़ रही है क्या, इफ नॉट यूज रिड्यूस द गेन, स्टिल नॉट देन यूज द डेरिवेटिव एक्शन। यूनिस भाई बताइए इंडस्ट्री रिलेटेड कौन सी स्किल आप चाहते हैं? द इफेक्ट ऑफ इंटीग्रल कंट्रोलर ऑन द स्टेडी स्टेट एरर एंड द रिलेटिव स्टेबिलिटी। तो इंटीग्रल कंट्रोलर टाइप इंक्रीजेस तो error decreases. Now due to addition of pole, stability reduces. So error is reduced and stability is reduced. D. Okay. State feedback design ESE 2014 is more realistic than conventional fixed configuration controller design. The drawback is all the state must be sensed and sent to feedback. Okay. Both statements are correct, but the second statement is the drawback, not explanation. है ना, वो कह रहा है ज्यादा रियलिस्टिक है, ज्यादा सही डिजाइन है स्टेट फीडबैक वाला, और वो कह रहा है इसमें नुकसान क्या है, तो ये इसका रीजन थोड़ी हो सकता है। चलो ठीक है यूनिस भाई, आई विल थिंक अबाउट इट। ESE 2016,
So now beta, if we plot the poles and the zeros, there are total of 4 poles and zeros. So pole is at -2, -4, lag, lead. So lag, lead, compensator, C. C. For type 2 or higher system, lead compensator may be used. Lead compensator increases the margin of stability. Absolutely correct. Because lead compensator increases the phase margin. In type 0 or type 1 system, stable operation is possible. If gain is reduced, any compensator lead, lag, lag, lead may be used to improve the performance. So both are correct. Okay, but it is not the correct reason. देखो टाइप 0 टाइप 1 में ज्यादा स्कोप नहीं होता बेटा स्टेबिलिटी सुधारने का अदर देन रिड्यूसिंग द गेन बिकॉज इफ गेन इज अबव द क्रिटिकल वैल्यू इट विल बी अनस्टेबल अदरवाइज स्टेबल बट द थिंग इज कि इन सच सिस्टम्स यू कैन यूज एनी टाइप ऑफ कंट्रोलर दैट यू वांट. What is the effect of natural frequency in zeta when derivative compensation is used? Natural frequency is same, zeta increases. Always remember derivative increases the zeta. ESE 2017, a LTI system with unsatisfactory steady state error is to be compensated. Which controller or which type of compensation can be provided? तो बेसिकली एरर डिक्रीज करना है सिमिलर टू इंटीग्रल कंट्रोलर. अब इंटीग्रल कंट्रोलर जैसा कौन है? लैग कंपेंसेटर. ओके, so answer should be B. Lag compensator will reduce the error. Frequency ESE 2017. Frequency for maximum phase shift is geometric mean of two corner frequencies. Point 0.04, 0.01. 50. B. ESE 2017. If error is 0, output of controller is 0. Yes, because it is proportional to error. If error is constant, output from controller is 0. वो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है अच्छा कौन सा कंट्रोलर है. ट्रू फॉर डेरिवेटिव, कांस्टेंट का आउटपुट 0. फॉर चेंजिंग एरर इन टाइम, the output from controller is k% for every 1% per second rate of change. तो डेरिवेटिव बी आना चाहिए क्योंकि 1% पर सेकेंड यानी कि कंट्रोलर आउटपुट is proportional to rate of change of error. So it is derivative. ESE 2017, phase lag network can be used to increase stability and bandwidth. No. Stability decreases, it reduces the phase margin. Bandwidth decreases. Phase lead network increases the bandwidth. Correct. Lead network bandwidth बढ़ाता है. ESE 2017. Inductor is not used to fabricate a lag network as it produces time delay and hysteresis loss. Correct. Lag and lead networks are constructed using R and C. Are constructed using R and C. And this is wrong.
capacitor can be used to fabricate lag network. ESE 2018, bandwidth can be increased by lead network. Lead network increases the bandwidth. It acts as a high pass filter. Lag network decreases the bandwidth. It acts as a low pass type of the filter. Low pass filter. Okay. Maximum possible phase shift 30 degree ESE 2018. This is repeat. This is a transfer function for all pass. 1 minus ST by 1 plus ST. ESE 2019. Poles and zeros are symmetrical about imaginary axis. ESE 2019, lag lead compensator has one pole and zero. Lag system ka, lag system is basically pole dominant. That is, pole is nearer to origin. The pole and zero are real and pole is to the right of zero. Pole is to the right of zero means nearer to origin. Okay. ESE 2020. Effect of phase lead network. As I told, lead network is like a derivative controller. Velocity constant is increased? No, it is decreased. Slope of magnitude curve is reduced at the gain crossover frequency. As a result, relative stability improves. Slope of magnitude curve is reduced. So basically it is adding, it is a zero dominant. तो स्लोप कम होगा ज्यादा होगा ये हम नहीं कह सकते. नॉट करेक्ट, बट नॉट करेक्ट पूछ रहा है. डी आएगा. बैंडविड्थ इंक्रीजेस. ठीक है, बैंडविड्थ इंक्रीजेस. इज दैट क्लियर? इट विल इंक्रीज द बैंडविड्थ. ESE 2020, a lead compensator speeds up the transient response, increases stability margin, helps to increase error constant but only limited way. यानी बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं करता, एरर कांस्टेंट में स्लाइट इंक्रीज आता है. टू रिड्यूस द एरर बेटर टू यूज द लैग कंपेंसेटर. पावर सिस्टम देखो यार, कुछ कॉलेजेस में अच्छी है प्लेसमेंट वाइज बट नॉट इन ऑल कॉलेजेस. वीडियो हिडन नहीं है बेटा. कौन सी वीडियो हिडन है ये बताओ. रैंक इंप्रूवमेंट बैच आएगा बेटा ईसी का, लेकिन लाइव प्लस रिकॉर्डेड फॉर्म में आएगा जतिन. अगर आप लेना चाहते हो बेटर रिकॉर्डेड ले लो. ESE 21, which of the following is not correct with respect to Cascade lead compensator? What is not correct with respect to the lead compensator? It is used to improve steady state performance. No. लैग कंपेंसेटर एरर रिड्यूस करता है, आपका लीड कंपेंसेटर नहीं. ESE 21 नॉट करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू पीडी कंट्रोलर. improves damping. See, it increases bandwidth. It is a high pass filter. ESE 21 lag lead compensator. Combination of lag and lead compensator. Yes. Lag section has pole to the right of zero. Yes. Lag section is pole dominant. Lead section has zero to the right of pole. Correct. D. Lead frequency compensation is a technique used to increase phase margin.
Lead compensator increases the phase margin. ESE 22, which is correct regarding lead or lag compensation. Lag compensator improves the steady state performance, reduces error. Lead compensation becomes effective when the phase of uncompensated system decreases rapidly near the gain crossover. यानी ये कह रहा है फेज का स्लोप ज्यादा है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है. Choose lead compensator when reduced noise is required. No, it increases noise because it is high pass filter. Combination of decreased gain and lead compensator improves steady state error and phase margin. देखिए अगर आप गेन डिक्रीज करेंगे तो एरर कांस्टेंट रिड्यूसेस, एरर इंक्रीजेस. So this statement is also wrong. Okay, ESE 2007. Match the column. Relative stability, gain margin, eigenvalue, state model, difference equation, discrete, corner frequency, Bode. So 2143 D. ESE 2007. It is asking about controllability and observability. If you see this matrix A, it is a diagonal canonical form. For diagonal canonical form, check the elements of B. They must be non-zero. Controllable. Check the element of C. One element is zero. So unobservable. B के एलिमेंट नॉन जीरो रहने चाहिए तो कंट्रोलेबल होगा. C के एलिमेंट नॉन जीरो रहने चाहिए तब ऑब्जर्वेबल आएगा. ओके. आइगन वैल्यू. दिस इज बेसिकली कंट्रोलेबल कैनोनिकल फॉर्म. आपको ना ए मैट्रिक्स के सारे कैनोनिकल फॉर्म आने चाहिए. दिस इज ESE 2008. दिस इज कंट्रोलेबल कैनोनिकल फॉर्म. So from the last row, I can write the characteristic equation. Now, -1 if I put 6 12 और एक 13 -11. नहीं -1 तो नहीं चलेगा. -1 चल जाएगा ना. -2 चेक करो. -2 also satisfies. Eigenvalues of A are actually roots of कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. ठीक है. कंट्रोलेबल कैनोनिकल फॉर्म की जो लास्ट रो होती है ना, देखो इफ द ट्रांसफर फंक्शन इज लाइक दिस, तो लास्ट रो विल बी -C -B -A लाइक दिस. तो ऐसे मैंने पहचाना. ESE 2008. State variable description of a linear autonomous system is given. A is the matrix, poles are. So poles are -2 and +2. ESE 2009. What is represented by the state transition matrix? स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स से क्या आता है? फ्री रिस्पॉन्स और नेचुरल रिस्पॉन्स, विच इज बेसिकली e⁻80 x0. तो ये आपका नेचुरल रिस्पॉन्स होता है. ESE 2009. A is given the state transition characteristic equation. Again beta, this is controllable canonical form.
So take the negative of coefficient in the opposite order negative. So they will become plus. Okay. ESE 2009 transfer function. Okay. So SI minus A is S plus 2 direct inverse of 2 cross 2 matrix. Now multiply it by B. 2 0. First row into first column. Second row into column. C is 0 3. So answer is B. B. ESE 2009, when a transfer function model is converted to state space, the order may be reduced during which of the following? Order कब reduce हो सकता है? Only when बेसिकली ऑर्डर चेंज नहीं होगा, क्योंकि अगर सी ऑप्शन भी देखें, पोल जीरो कैंसिलेशन टेक्स प्लेस इनसाइड ट्रांसफर फंक्शन. ट्रांसफर फंक्शन से स्टेट स्पेस पे जाते हुए नहीं कैंसिल होते पोल जीरो, दे गेट कैंसिल्ड इन द ट्रांसफर फंक्शन इटसेल्फ. कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन रिपीटेड. ESE 2010. So the answer is plus minus J2. ESE 2011. This system is it is asking about controllability. QC is a augmented matrix like this. Controllable for all values of B. Okay. Determinant is non-zero, so it is controllable. ESE 2011, the state variable description is given like this. The poles are located at. This is repeat. Phi t, which relation is not true? ESE 2012. This relation. Okay, phi t1 minus t2 is not this. कैसे? देखो. Correct? So it's not phi t1 plus t2. Roots. Again, beta, controllable canonical form. So take the coefficient for characteristic equation in reverse with a negative sign. ESE 2013. State equation can be obtained from transfer function by. State equation कैसे आती है ट्रांसफर फंक्शन से बोलिए?
direct decomposition. Following property attributed to the state model is unique? No. For same transfer function, we can have multiple state model. Transfer function is unique. State model can be derived from transfer function. See. ESE 2015 transfer function is okay. एक सेकेंड 2-1 था ना बी. B. ESE 2017 transfer function. This is controllable canonical form. Directly write it. Very easy. B. एक कंट्रोलेबल कैनोनिकल फॉर्म है. सी वाली टर्म ऊपर आती है, डिनोमिनेटर ए से आएगा एंड बी शुड ऑलवेज बी 0-1. बी शुड ऑलवेज बी लाइक दिस. ESE 2018 state transition matrix. Now take the inverse. See. ESE 2018, for a feedback control system, all the roots can be placed at desired location if the system is controllable and observable. ESE 2018 बेसिकली कंट्रोलेबल ऑब्जर्वेबल सिस्टम के पोल्स हम डिसाइड कर सकते हैं. ट्रांसफर ESE 2019 ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ डिस्क्रीट टाइम सिस्टम. Instead of S, we use Z. Because for discrete time, we use Z transform. ESE 2019, we can transfer a system from any state to a desired state in a finite time using a input. Then system is said to be state controllable. अगर आप स्टेट डिसाइड कर सकते हो, कुछ देर में किसी भी स्टेट से किसी दूसरी स्टेट पे जा सकते हो यूजिंग द इनपुट, दैट मीन्स स्टेट्स आर कंट्रोलेबल. द पेयर ए बी इज कंट्रोलेबल implies A transpose B transpose is observable. AC is observable implies A transpose C transpose is controllable. This is the theorem on controllability observability. ESE 2020. 21. Again beta, this is only diagonal elements are non-zero. Diagonal canonical form.
but one element of B is 0, C is 0. So uncontrollable and unobservable. All elements of B non-zero for controllability. All elements of C non-zero for observability. ESE 21, number of right half poles. इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी. या तो डिटर्मिनेंट निकालो बेसिक से. -30. Okay. So basically S cube 27s minus 15s 27s minus 15s 30. Minus 180 minus 210. 210 by 15. 210 by 15 14 आ जाएगा. So two sign changes. Two roots in the right half plane. दो आ जाएंगे बेटा राइट हाफ में बिकॉज देयर आर टू साइन चेंजेस. निधि बेटा ये सीरीज तो वैसे भी आज खत्म हो रही है. पीडीएफ बेटा ऐप पे मिलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेक्शन में. थैंक यू फरहान भाई. और इस चैनल पे बेटा नेटवर्क है, सिग्नल है, डिजिटल है, एप्टीट्यूड है, ठीक है, कंट्रोल का क्रैश कोर्स है. Now for controllability, observability, we will multiply A and B. CA first row into first column, first row into second column. Determinant of Q naught is also non-zero. It is observable. See, controllable and observable. State transition matrix.
ESE 2022 the denominator can be factorized now partial fraction -1 -2 -1 डालोगे और -2 डालोगे तो based on this you can take Laplace inverse (2e to the power minus t minus e to the power minus 2t). -2 plus 2 to b. We have to check the elements. ESE 24. Which statement is correct regarding state variable approach over transfer function? State variable can be fed back. It consider initial condition, but state model is not unique. आप state variable को feedback में use कर सकते हो. You can basically use it for feedback, but state model is not unique. But the advantage is it considers initial condition. 3x3 मैट्रिक्स है बेटा, तो उसके लिए आपको B फिर AB फिर A² लेना पड़ेगा. ऐसे C फिर CA फिर CA². तो 3x3 का डिटर्मिनेंट बनेगा फॉर कंट्रोलेबिलिटी एंड ऑब्जर्वेबिलिटी. Now beta, here you have to use the concept of Jordan canonical form. ठीक है, this is J Jordan block 1. So row of B corresponding to last row of each Jordan block must be non-zero. देखो, पहले जॉर्डन ब्लॉक का लास्ट रो ये, दूसरे वाले का ये, बोथ आर नॉन जीरो, कंट्रोलेबल. अब यहां पे इलेक्ट्रिकल दोस्त अगर आप करते कैलमेंस टेस्ट से तो A इंटू बी निकालते पहले. ठीक है, you will calculate AB, first row into first column, second row into column, third row into column, then A²B. A²B is basically product of these two. -1 -1 -2, this is +1, this is 4. तब आप कंट्रोलेबिलिटी मैट्रिक्स बनाते, पहली कॉलम होता B, फिर AB, फिर A²B. Now you will check the determinant of this. स्मॉल मैट्रिक्स बेटा, वो जो क्वेश्चन था उसमें मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट थे, और कंट्रोलेबिलिटी ऑब्जर्वेबिलिटी के लिए हम एक समय पे एक इनपुट एक आउटपुट लेते हैं इन कैलमेंस टेस्ट.
Initial state vector ESE 24 last question can be found from UT and YT over a finite interval of time, then the system is, अगर इनिशियल स्टेट वेक्टर आप निकाल सकते हो यूटी से और वाईटी से, तो सिस्टम इज ऑब्जर्वेबल. If the states can be determined using the output, the system is observable. So that's it, bachcho. As I promised, all 15 subjects we have covered for electrical. 15 subject हमने cover किए. 10 subjects I have covered. 2 subjects नीरज sir, 2 subjects खेमेंद्र sir and 1 subject अंकुश sir. सभी subject के हमने आपको PYQ करा दिए हैं. And they will be helpful not only in engineering services but in GATE, in AJE exam. Everywhere it will be helpful, so you should definitely watch it. Okay. Thank you everyone and all the best for ESE examination. Thank you.